Hello, hello. So, hello dear students. अभी हम पढ़ेंगे टेंजेंट टू सर्कल्स. ओके, अभी हमने सर्कल्स के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे टेंजेंट टू सर्कल्स. इसमें क्या है, आपको देखिए, अगर सर्कल अगर मेरे पास है, आपको अगर प्रूव करना है कि दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपके O है एंड इफ OP इज परपेंडिकुलर टू एनी लाइन L. अगर आप इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, अब सभी को मालूम है ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर है हमारे OP इज गिवन टू बी परपेंडिकुलर, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, आप सभी को मालूम है किसी भी ट्रायंगल के अंदर द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. सो ये अगर ये 90 डिग्री है तो उसका मतलब OX जो है वो OP से बड़ा होगा. अब कोई मर्जी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर सभी जगह जो होगा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. यानी कभी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर अगर मुझे इसको परपेंडिकुलर अगर शो करना है, अगर मैं ये शो कर दूं कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बात बन जाएगी. ठीक है, तो हमने क्या किया, दिस इज अ सर्कल, मुझे प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY. इफ आई कैन प्रूव दैट OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O टू दिस टेंजेंट XY, okay, then it will be done. Since tangent is a line which touches the curve at a single point only. Now in the case of a circle, all the points on the tangent other than P lies outside the circle. So let us assume there is a point Q on the tangent other than P. Obviously it must lie outside the circle. O is a point lies inside the circle. If I join these two points, then there must exist a point K which lies on a circle. Okay. And we know that in a circle is the locus of all those points which moves in such a way whose distance from the fixed point is always same. That is, all points are equidistant from the center of a circle. So that's why OQ is equal to OK plus KQ. OQ is equal to OK plus KQ. That is, OQ is greater than OK and OK must be equal to OP, because being the radius of a circle, that is OQ is greater than OP. Okay, that is OP is less than OQ. So OP is the shortest distance from the point O to the tangent XY. That is, OP is perpendicular to the tangent XY. Hope it is clear to all of you. So if a question comes that from a point how many tangents you can draw, from a point how many tangents you can draw on a circle, is the point that lies on the plane of a circle. Someone will say 1, someone will say 2, someone will say infinitely many, but that depends upon the position of a point basically. So what I mean to say is, if a point lies inside the circle, then there is no tangent. I am considering about the same plane. Okay, if a point lies inside the circle, then there will be no tangent. If a point lies on a circle, then there is only one tangent. And if a point lies outside the circle in the same plane, then there are two tangents. And if a point lies outside the circle, not in the same plane, then it has infinitely many tangents. Okay. So next our theorem is, if I have to draw the tangent from a point, if there is a point P lies outside the circle, so if I draw the two tangents, let's say PT and PQ, okay, then the length of the tangents are equal. That is, PT is equal to PQ. This is where to prove. TP stands for to prove. It is P is a point lies outside the circle, then we have to prove that the length of the tangents are equal. So what we should do is, that O is the center of a circle, just join OT and OQ. Okay, and join OP as well. In these two triangles, what we can see that in triangle PTO and triangle PQO, what you have is angle PTO is equal to angle PQO 90 degrees. We prove that tangent is perpendicular to the radius. We just prove that tangent is perpendicular to the radius. That's why PTO is equal to angle PQO, being the 90 degrees. OT is equal to OQ, being the radius of a circle, and PO is equal to PO common. Okay, so therefore by
right angle hypotenuse side congruences, what we have is triangle PTO is congruent to triangle PQO. Okay, so it means PT is equal to PQ, and we can have very good results as well. PT is equal to PQ, length of the tangents are equal, as well as we are having some more beautiful results like this. If 1, 2, 3 and 1, 2, 3, that is angle TPO is equal to angle QPO. That is this angle 1 is equal to angle 2. Angle this is equal to angle this, as well as angle POT is equal to angle POQ. That is this angle is also equal to this angle. Okay, if the tangents are drawn, then angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4. Also, we can say that we can do very good results as well. As you see in quadrilateral, PTOQ, angle PTO plus angle PQO is 90 plus 90, that is equal to 180 degrees. This angle plus this angle is 180 degrees. So you can observe that it means PTOQ is a cyclic quadrilateral. PTOQ is a cyclic quadrilateral. You can see here. This is 90, this is 90. It means PTOQ is a cyclic quadrilateral with PO as a diameter. Okay. So we can derive many more results in this. Likewise, if I join PQ, let it cut at a point M. Got it? So if I join PQ, let it cut at a point M, then we are having very good results as well. That since OT is equal to OQ, this is the angle bisector. Okay, in a circle, if the chords are equal, then this must be 90 degrees. Okay, or you can see like here as well. PT is equal to PQ, OT is equal to OQ. I told you regarding about the perpendicular bisector. Okay, you can see as PT is equal to PQ, OT is equal to OQ. That is, in line PQ, all the points P and O are the points which are equidistant from T and Q. That is, PT is equal to PQ, OT is equal to OQ. That is, P and O are the points which are equidistant from T and Q. It means if I join PO will be the perpendicular bisector of PQ. Okay, I told you when this in perpendicular bisector concept. Okay, so here PO becomes the perpendicular bisector of TQ. We get one of the important results that any point on this line is equidistant from T and Q. And since it is a perpendicular, then what we have is we get TM is equal to MQ as well as TMP is equal to QMP is equal to 90 degrees. We will derive many more beautiful results in this way. Okay, I am making the diagram once again, and we will derive many more results. So till now we have studied that. In this diagram again, I am just plot a different diagram. So PT and PQ are the tangents. So we learned this concept that PT is equal to PQ. Length of the tangents are equal, and we have learned that angle 1 is equal to angle 2, as well as angle 3 is equal to angle 4, as well as PTOQ is a cyclic quadrilateral. Okay, with PO as a diameter. Okay, and we learned that PO is the perpendicular bisector of TM. Perpendicular bisector of TM. That is, PO is perpendicular to TM, and TM
perpendicular bisector of TQ, and PO is a perpendicular to TQ, and you can write as TM is equal to MQ. These are the results we have derived right now. Okay, so now you can see as here I taught you in the right angle triangle concept, like if this is a right angle triangle, you can see here PTO, and TM is a perpendicular. PTO is a right angle triangle, TM is a perpendicular. We have derived many results in case of a right angle triangle when I taught you regarding the Pythagoras theorem as well. So by using those concepts, we can have some more beautiful results like PT square. PT square you can write as PM into PO. PT square is equal to PM into PO, and OT square is equal to OM into OQ. Okay, and TM square is equal to PM into MO. These are the results which are derived in the right angle triangle concept. Okay, since one more result you can say as this angle is equal to this angle. Okay, this is also angle 1. This is angle 1, this is angle 1, and this is angle 3. अगर आपको याद हो तो हमने डेराइव किए थे राइट एंगल ट्रायंगल में कि ये वाला एंगल x आ जाएगा, ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल y, ये वाला एंगल y. ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे these two angles are equal. That is, if I mention here as that this be angle x, this is angle x, this must be angle x. Okay, and if these two angles are equal, let this be angle y, this is angle y, and this is also angle y. So you can see here as that is angle TPQ. One more beautiful result. That is angle TPQ. This angle TPQ is twice of angle OTQ. Okay, this angle TPQ is twice of angle OTQ. This is twice of x. This is x. Also, angle TOQ. Angle TOQ is twice of angle PTQ. And this is y. This is twice of y. Okay, you can get many of the results, and this PO is a perpendicular bisector. That is, if I can take any of the point, you can say a point, you can say N here, then NT must be equal to NQ. Okay, and one more beautiful result I would like to tell you that these two angles are equal. When I will teach you in the concept of angle bisectors, then we will see that you can see here as if this angle, you can say this is x, this is y. That is x, p, y. When I will teach you in the angle bisector concept, you can see here in the angle bisector concept, this is angle bisector. Basically, on the angle bisector, all the points are equidistant from this. That is, here as you see that OT is equal to OQ. Okay, that's why we have made a circle. I will teach you in the concept of when I teach you in the regarding about angle bisectors. Okay, so PO is the angle bisector of this angle, and as well OP is also angle bisector of TOQ. That is, you can say as you can see as PO is the angle bisector of angle TPQ, and again PO is the angle bisector of angle TOQ. Okay, it is all the points. If I can take any of the point on this line, and if I draw the perpendicular, all are also equal. That is what I would like to say, that in this case, with these any point, these are the tangents. If I can take any point here, and if I draw the perpendicular on this line, okay, these all are equal. This distance must be equal. Similarly, if I can take from this point, and if I draw the perpendicular or any other point, if I can draw the perpendicular on these two lines, again their lengths are also equal. Okay, we will study the concept of angle bisector. Okay, later on as well. मैं आपको बताऊंगा, जब मैं एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट बताऊंगा तो आपको ये रिजल्ट भी बताऊंगा कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है. नाउ वी विल डिराइव सम मोर रिजल्ट्स ऑन दिस डायग्राम.
So here PT and PQ are the tangents. PT and PQ are the tangents. So now we are deriving some more beautiful results. Likewise, if we can draw another tangent, you can say as AB, and this is C. Okay. If we can draw another tangent at a point C, so what we can observe is we will derive the result, that is perimeter of triangle PAB is equal to sum of the length of the tangent, that is PT plus PQ, or you can say as twice of PT. Okay, or you can say as the length of the tangent is half the perimeter of this triangle PAB. How we can do this? Like PT is equal to PQ, since we know that PT is equal to PQ, and we can know that PT is equal to PA plus AT, and PQ we can write PB plus PQ. PT is equal to PA plus AT, PQ is equal to PB plus PQ. Again, AT and AC are the tangents, and we know that from the point A, the tangents are drawn, that AT must be equal to AC. AT must be equal to AC, and also CQ must be equal to CB. CQ no, BQ must be equal to BC. Okay, we are using this concept. This is PA plus AT will be equal to AC, and this is PB, and BQ will become equal to BC. So we have the result PA plus AC, that is this plus this is equal to this plus this. Okay, now perimeter of triangle PAB will be PA plus AB plus BP. Perimeter of a triangle PAB is PA plus AB plus CB. That is, we can write this as PA, AB we can write AC plus CB plus BP. So since PA plus AC is equal to PB plus BC, since these two are equal, PA plus AC is equal to PB plus BC. Okay, so we can write this as PA plus AC plus PA plus AC. Okay, that is twice of PA plus AC. Again, AC will be equal to AT, that is twice of you can write this. Okay, this is PA plus AT. This is twice of PT, and this is a perimeter, that is PA plus AB plus BP is equal to twice of PT, or you can write PT plus PQ. Okay, I would let you know one beautiful result. Let the sides of a triangle, you can say this is small a, this is small b, this is small c. Let PAB is any triangle. So the perimeter twice of x is given to be equal to a plus b plus c. Let PAB is any triangle. On produce there is a circle touches this. Okay, then its perimeter is twice of x is equal to a plus b plus c. So s comes out to be a plus b plus c by 2. So you can see here this is the perimeter twice of s. You can see as twice of s is equal to twice of PT. You can see as PT comes out to be equal to semi-perimeter. That is, PT, the length of the tangent will be the semi-perimeter of this triangle, PAB. This is one of the important results. We will use it in the Olympiad geometry as well. That is, length of the tangent is equal to the semi-perimeter of this triangle. Okay. We will do some more results. It is there is a quadrilateral circumscribes a circle. Okay. There is a quadrilateral circumscribes a circle. Like the quadrilateral be A, B, C, D, and we can have many beautiful results. Like one of the beautiful results is AB plus CD is equal to AD plus BC. That is, if a quadrilateral circumscribes a circle, then we have a result this plus this is equal to this plus this. We can prove it easily. Let this is P, Q, R, and S. Okay. Since we know that the length of the tangents are equal, that is AP is equal to A, let this be X, let this be X. AP is equal to S, let this be Y, this is Y. BP is equal to PQ. Let this be small z, this is small z, because length of the tangents are equal. Let this be small t, then this is also small t. So that AB becomes X plus Y, CD becomes T plus Z. Therefore, AB plus CD becomes X plus Y plus T plus Z. Okay. Also,
AD becomes x plus t and BC becomes y plus z. So AD plus BC becomes again x plus t plus y plus z, which is same as x plus y plus t plus z. Both are equal. That is, we can get this result. If a quadrilateral circumscribes a circle, then this plus this is equal to this plus this. Okay, we can get one more beautiful result like this way, that if a quadrilateral circumscribes a circle, let this be A, this is B, this is C, this is D, and this, let O be the center of a circle. Okay, then angle formed by the opposite sides, that is where this result as angle AOB plus angle COD is equal to angle AOD plus angle BOC, which is equal to 180 degrees. That is, this angle plus this angle is equal to this angle plus this angle is equal to 180 degrees. Because अभी आपको याद हो तो अभी हमने किया था कि अगर मैं टेंजेंस ड्रॉ करता हूँ, then the line segment joining the center to this is the angle bisector of both the angles. अभी हमने पढ़ा था ना, ये जो लाइन होती है इसका एंगल बाइसेक्टर होती है. तो अगेन लेट द पॉइंट बी पी क्यू आर एंड एस. अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, ओके, अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये जो एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा बेटे. These two angles are equal. Let this be x, let this be x. ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा. Because BP and BQ are the tangent. This is the angle bisector. ऐसे ही ये वाला एंगल अगर z है तो ये वाला एंगल भी z आ जाएगा बेटे. ऐसे ये वाला एंगल अगर t है तो ये वाला एंगल भी t आ जाएगा. Okay, so angle AOB becomes, this point is O. Okay, this point is O. So angle AOB becomes x plus y. Angle COD becomes t plus z. Okay, so angle AOB plus angle COD, it becomes x plus y plus t plus z. As well as angle AOD becomes, AOD is x plus t, and BOC becomes y plus z. So angle AOD plus angle BOC becomes x plus t plus y plus z, which is same. And since angle at a point is still 60 degrees, so as these two angles are the same, so each angle comes out to be equal to 180 degrees. Okay, now we will derive some more beautiful results. Direct common tangent. It states as there are the two circles. Okay, and these tangents are called the direct common tangent. बेटा अगर दो सर्कल्स अगर हैं, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. इनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है. तो आज हम डराइव करेंगे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालते हैं. अगर आपको सर्कल की रेडियस गिवन हो, capital R, that is small r, okay, and the distance between the centers is also given. आपको distance between the centers जो है वो भी अगर आपको given है, तो आपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसकी लेंथ कैसे निकालनी है. पहले मैं बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बराबर कैसे होती है. तो हमने अगर इसका प्रोड्यूस कर दिया, ये याद रखना, ये टेंजेंट और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, लेट दिस बी O, लेट दिस बी C, ये हमेशा कंकरेंट होंगे. ये सारे लाइन कंकरेंट होंगी. आप इसको देख भी सकते हो कि ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से आएंगे, क्योंकि ये देख सकते हो, लेट दिस बी A, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज हम यहाँ C ले लेते हैं, दिस इज D, लेट द सेंटर बी M. ओके, आपको मालूम है TA इज इक्वल टू TB, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल. ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो हमने प्रूव कर दिया था कि इसका एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा बेटे. ऐसे ही आप कह सकते हो कि TC जो है TD के बराबर है. ठीक है, तो ये भी इसका एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा. तो याद रखना, ये M और O जो है हमेशा एंगल D के एंगल बाइसेक्टर पे होंगे. ठीक है राजेश. तो मैंने कहा TA इज इक्वल टू TB, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, और इक्वल TC इज इक्वल टू TD. ठीक है, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट, दैट इज TA माइनस TC इज इक्वल टू TB माइनस TD. TA में से TC को हटा देंगे, TB में से TD को हटा देंगे, so we can get AC is equal to BD. That is, length of the tangents are equal.
In case of direct common tangent, length of the tangents are equal. Now we will derive how to find the length of the direct common tangent. Okay. So we are having two circles here. Let you can say O and M be the centers. This is capital R. This is small r. Okay. We need to calculate this length. This is denoted as TD, the length of the tangent. Let this be A, let this be C. This is 90 degrees, this is 90 degrees. So what I should do is, I just draw the perpendicular from M to OE. मैंने क्या किया बेटे, M से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. We have been given the distance between the centers. हमारे को सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है. क्या करेंगे? This is 90, this is 90, this is 90. This must be 90. ठीक है? So इसका मतलब क्या है? A, C, M, R is a rectangle. So this is small r, this is small r, this is TD, this is TD. TD stands for length of the direct common tangent. Now this is capital R, this is small r. It becomes R minus small r. You can say name it as, let the point of this is K, and this is 90. Then this angle is 90. That is OKM becomes a right angle triangle. In triangle OKM, by using the Pythagoras theorem, OM square is equal to OK square plus KM square. That is D square is equal to R minus small r whole square plus TD whole square. So TD square becomes D square minus of R minus small r whole square. It becomes, TD comes out to be square root of D square minus R minus small r whole square. It becomes, this is, TD becomes square root of D square, okay, minus of R minus small r whole square. I can write again. This is square root of D square minus R minus small r whole square. Hope it is clear to all of you. So what happens is the tangents, is the circles touch each other. This is one of the beautiful results. Is the circles touch each other. This is capital R, this is small r. Then this becomes D. That is, D becomes capital R plus small r. This is TD. When the circles touch each other, then the distance between the centers becomes the sum of their radii. That is R plus small r. So when the circles touch each other, just put the value of capital R plus small r. In that case, this is square root of R plus small r whole square minus R minus small r whole square. It comes out to be equal to square root of 4 times of capital R small r. That is, in that case, it comes out to be twice of square root of capital R into small r. When the circles touches each other, then the length of the direct common tangent becomes twice of the square root of their product of their radii. Okay, we will have some beautiful results based on this as well. Okay, we will do. Okay, I will do that question as well. Okay, there is one more. There is one question in which there is a direct common tangent and there is one circle. Now radius of this circle is small a, radius of this circle is small b, this is radius of this circle is small c. There is one beautiful result, that is 1 by root c in that case is equal to 1 by root a plus 1 by root b. Okay, we will derive this result as well, because let this be p, let this be q, let this be m. So pq becomes 2 root ac. pq becomes 2 root ac by using this result. Okay, qm becomes 2 root bc. And Pm becomes 2 root AB. Okay, so we can have Pm is equal to PQ plus QM. We can have Pm is equal to PQ plus QM. So Pm is twice of root AB, PQ is twice of root AC, and QM is twice of root BC. Okay, just divide by 2 times of root ABC. Just divide both sides by 2 times of root ABC. Okay, so what we get is, just divide all the terms by root AB, 2 times of root ABC. We can have 1 by root C is equal to 1 by root B plus 1 by root A. Okay, this is one of the beautiful results of this, you can say result, that is the circles are touch each other, there is a common circle as well. Then 1 upon root C is equal to 1 by root A plus 1 by root B. You can use this result directly. Okay.
Now we will do transverse common tangent. Transverse common tangent means it is the two circles. Okay, and these tangents are called the transverse common tangent. Okay, these tangents are called the transverse common tangent. आपको याद रखना पड़ेगा इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिफरेंट होंगे। याद ये मत सोचना कि सेम सेम हो जाएंगे। यानी कि अगर जब मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाई थी तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये अलग अलग थे हमारे पास बेटे, याद रखना। ठीक है, ये सेम सेम मत ले लेना कि एक प्लेन में एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होती है। द ब्लू लाइन आर द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, द ब्लैक लाइन आर द इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ओके, अब अगर मुझे आपको ये बात और बता देना चाहूंगा कि ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूँ, जैसे O और M आर द सेंटर्स, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो ये वाला पॉइंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट सारे के सारे, पहले मैंने T लिया था, इसको अगर आप लोग शायद K मान लेते तो OKMT इस सारे के सारे कोलिनियर होंगे। ये A था हमारे पास पहले वाले केस में, ABCD ऐसे था मेरे पास, मैंने ऐसे लिया था। ओके, और मैं जानबूझ के ये वाले पॉइंट अलग लेना चाह रहा हूँ। याद रखना ये सारे पॉइंट अलग होंगे, इसको कुछ भी ले सकते हो। यू कैन से दिस इज, कुछ भी ले लो, लेट दिस बी PQRS, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। ओके, समझ आया बेटा? नहीं है, ब्लैक वाले पॉइंट P, S and QR आर द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ब्लू वाले जो है AC and BD आर द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। याद रखना सेंटर्स जो है हमारे पास ये सारे के सारे कोलिनियर होंगे। आपको एक बड़ी सी बात और बता देता हूँ कि ये R था हमारे पास, स्मॉल r था। एक शानदार सा रिजल्ट बताना चाहूंगा कि OT/MT का जो रेशो होगा, OT/MT का जो रेशो होगा ये भी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r होगा। ठीक है, और OK/KM का जो रेशो होगा ये भी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r होगा। अगर आपको याद हो, जब मैंने मेनालिस थ्योरम बताई थी तो मैंने कहा था कि एक जो सेगमेंट को एक पॉइंट इंटरनली कट करता है और एक्सटर्नली कट करता है, तो बेसिकली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो ये पॉइंट होता है, K वाला पॉइंट O और M को इंटरनली डिवाइड करेगा इन द रेशो ऑफ कैपिटल R टू स्मॉल r, और जबकि T वाला जो पॉइंट है इसको एक्चुअली कट करेगा। इसका प्रूफ अगर आप करना चाहें तो बड़े आराम से प्रूफ भी हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये OM है और ये MS है, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, दिस इज कॉमन। ओके, तो यहाँ पर OK/KM का जो रेशो है वो भी, ये भी कैपिटल R है, ये भी स्मॉल r है, तो कैपिटल R टू स्मॉल r रहेगा। ठीक है बेटे, उसके लिए भी प्रूफ करेंगे तो वो सारे सिमिलर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो याद ना OT/MT का रेशो भी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r आएगा, और OK/KM का रेशो भी स्मॉल r कैपिटल R अपॉन स्मॉल r आएगा। K वाला पॉइंट इसको OM को इंटरनली कट करेगा, T वाला पॉइंट इसको एक्सटर्नली कट करेगा। अब हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन, इसको हम इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी है। इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। Let's give a point of OP and this is SM. Where to find the length of the transverse common tangent? ठीक है बेटे, वैसे मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि जो TS की जो लेंथ है, अगर मैंने ये वाला पॉइंट पहले लिया था वो दोनों लेंथ भी बराबर रहेंगी, आप देख भी सकते हो। अभी मैं डेराइव कर देता हूँ, फिर वो भी प्रूव करूंगा कि इसकी पहले इसकी लेंथ निकालते हैं। दिस इज कैपिटल R, दिस इज स्मॉल r। हमने क्या बोला कि दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल। ओके बेटे, तो अब क्या किया हमने, एक काम बढ़िया तरीके से निकालना है। मुझे D दिया हुआ है, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो हमने क्या किया, इसको प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, दिस पॉइंट इज P। हमने क्या किया, M वाले पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दिस इज अ राइट एंगल, लेट दिस पॉइंट यू कैन से दैट इज T ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो MT इज परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस। सो ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, MSPT इज अ रेक्टेंगल। ये वाला अगर स्मॉल r है, ये वाला भी स्मॉल r हो जाएगा। इसकी लेंथ को मैंने TI माना है, दैट इज PS की जो लेंथ है वो मैंने TI मानी है, दैट इज इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ओके, तो ये लेंथ, तो ये भी TI हो जाएगा बेटा हमारे पास। रेक्टेंगल हो गया था हमारे पास, MSPT इज अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड बराबर हो जाएंगी। तो इन ट्रायंगल OTM, in triangle OTM, what you have observed that this is a right angle, so that is OM square
इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस TM स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये कैपिटल R था, ये स्मॉल r था, तो किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। TM का मतलब क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ दैट इज TI का स्क्वायर, और OM का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स दैट इज D स्क्वायर। तो टेंजेंट जो होती है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ किसके बराबर आ जाएगी? D स्क्वायर माइनस ऑफ R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। TI मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर। समझ आए? आप इसको देखना चाहे देख सकते हैं। अगर सर्कल टच करते हैं आपस में एक दूसरे को, अगर सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, आप सभी को देख लीजिए, ये तो जीरो हो जाएगी ना हमारे पास। इस केस में D कितना हो जाएगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सर्कल टच ईच अदर, इन दैट केस D कम्स आउट टू बी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो आप देखेंगे उस केस में TI जो है वो जीरो हो जाएगा बेटे। इन दैट केस एक पॉइंट पे आ जाएंगे ना हमारे पास, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं बता रहा था आपको कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ भी क्यों बराबर होती है, देखेंगे आप लोग। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, लेट दिस बी Q, लेट दिस इज PQ, ये वाला पॉइंट है, R है फॉर एग्जांपल, कुछ भी ले लेते हैं। तो PS एंड QR आर द टेंजेंट। आप देख सकते हैं कि KP की लेंथ इसके बराबर आएगी, बिकॉज KP एंड KR आर द टेंजेंट। KP की लेंथ KR के बराबर आएगी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। आल्सो KQ जो है वो KS के बराबर आ जाएगा। इस लिख लेते हैं, KS जो है KQ के बराबर आ जाएगा बेटे। KP इज इक्वल टू KR, KS इज इक्वल टू KQ, दोनों का ऐड कर देंगे। इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो KP प्लस KS इज इक्वल टू KR प्लस KQ हो जाएगा। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी कि जो PS की जो लेंथ है वो RQ के बराबर आएगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ भी बराबर होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ भी बराबर होती है। ये था सारा का टेंजेंट टू सर्कस के ऊपर। अभी हम धीरे धीरे आगे और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीजें करेंगे सर्कस के रिगार्डिंग, ठीक है। थैंक यू।